لگا رہا ہوں جی ٹائم اسٹارٹ ہو گیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ٹو آل دا جینٹلمین. Misbah ul Haq is going to hold the arrival press conference. We have been here for last 2 days. I will start from the Misbah ul Haq. If Misbah ul Haq wants to, uh, present his opening statement. Ji Misbah bhai. Thank you, Ibrahim. Thank you, everyone. As everybody knows that England is always important tour for Pakistan or any team, especially in the context of the whole situation at the moment, as we are just nearing toward the T20 World Cup. So it's very important that we are playing against the top side, especially champion and 50 overs World Cup and runner-up in the previous T20 World Cup. And we know that England is a force in white ball cricket at the moment. So it's a big opportunity for us going into the World Cup and the preparations. I think to play against such a good side and prepare for the World Cup and see where we stand. And I think it is a great opportunity for every player to see where we stand. And obviously we are looking forward and looking for a very good series and play good cricket against England. Thank you very much. And I think this is what I have to say. It's always been a good tour. Whenever we just tour England, I think we enjoy cricket, and Pakistan team always enjoy playing here. Players love to play in England. So looking forward for a very good series. Thank you so much. Thank you. Saj, can you ask the first question, and then Rashid Shakur? Thank you very much, Ibrahim. Mr. Bhai, Assalamu alaikum. Welcome to the UK. Thank you. Thank you. Walaikum assalam. Mr. Bhai, how big the backroom staff on this tour of England, and how disappointing are the circumstances arising from his non-appearance on this tour? Can you please repeat your question, because I could not just get your question. Sorry, can you hear me now? Yeah. Okay. The question is, how disappointing is it not to have Yunus Khan on this tour of England, and how much will he be missed as a member of the backroom staff? Look, I don't want to comment on that. Obviously, his experience was always good for these players, young players, but this is something which is all decided by in between the PCB and the coaches. So whatever we had at the moment, we have to just look forward for that. But obviously, Yunus' experience is always there, help the young players. But now we have to live with that, and whatever resources we have, we are just focusing on that. Rashid bhai? जी अस्सलाम वालेकुम मिसबा. जी वालेकुम अस्सलाम. मिसबा, ऐसा लगता है कि अब इंग्लैंड हमारा सेकंड होम हो गया है. 2016, 17, 18, 19, 20 6 साल में छठा टूर है. तो कंडीशंस से तो अब बहुत ज़्यादा आशनाई यकीनन हो गई होगी, कोचिंग स्टाफ की भी, प्लेयर्स भी. लेकिन जिन हालात में टीम अब इंग्लैंड आई है, हमने PSL का जो अबू धाबी लेग देखा है, उसमें जो आपके की मेंबर हैं उनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही. तो ये कोई फिक्रमंदी की बात है कि आपके जो की प्लेयर्स हैं जो टीम में सिलेक्ट हुए हैं वो इस वक्त इतनी ज्यादा फॉर्म में नहीं है? जैसे हफीज हैं, फिर इसके बाद आपके शादाब आ गए, आजम खान जिनको टीम में लिया है, फहीम अशरफ, नवाज, हारिस रऊफ. तो ये वो खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने परफॉर्म मतलब पहले किया हुआ है. तो कुछ फिक्रमंदी की बात तो नहीं है आपके लिए? देखिए, हमेशा ये अच्छी चीज होती है कि आपके मैक्सिमम प्लेयर अच्छी फॉर्म में, अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में है जब भी किसी ऐसे टूर पे आए.
بٹ میں ہمیشہ کرکٹ کھیل کے بھی یہی سیکھا کہ ڈزنٹ میٹر سم ٹائمس کہ اچھی فارم ہوتی ہے, اچھے رنز ہوتے ہیں, اور انٹرنیشنل کرکٹ میں آ کے کئی دفعہ آپ وہ پرفارم نہیں کر پاتے, بٹ کئی دفعہ آپ کی فارم اچھی نہیں ہوتی اور آپ آتے ہیں زیادہ فوکسڈ آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اس چیز کو واپس لانے کی. اور کئی دفعہ ہم کہتے ہیں نا کہ وہ رنز جو آپ پہ ڈیو ہوئے ہوتے ہیں وہ رائٹ ٹائم پہ ہوتے ہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں. ہوپنگ دیٹ obviously ایک چیز اور بھی ہے کہ T20 کرکٹ میں obvious جتنے بھی ہمارے پلیئر ہیں سارے T20 کے پلیئر ہیں, تو ایک اچھی چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم ہے. ابھی پہلے ون ڈے کھیلنے ہمیں یہاں پہ, تو جو ہمارے پاس یہ ٹائم ہے اس کو ہم یوٹیلائز کر سکتے ہیں. اور ون ڈے کرکٹ کھیلنے کے بعد T20 تک جو 2 ہفتے ہمارے پاس ہیں, اس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کریں گے اور کوشش کریں گے کہ سارے پلیئر ان کو پراپر پریپریشن کے ساتھ ہم T20 کرکٹ میں جائیں. ہوپ فلی فارم جو ہے وہ کوئی نہ پرماننٹلی آتی ہے نہ پرماننٹلی جاتی ہے. لوکنگ فارورڈ کہ انشاءاللہ اس کو واپس لانے میں آپ جتنی محنت کرتے ہیں ایز اے پلیئر اینڈ کوچنگ اسٹاف, فارم جو ہے وہ واپس آپ لا سکتے ہیں. یہ ٹائم اتنا ہے کہ اس میں آپ اس کو لے کے آ سکتے ہیں. تھینک یو, گڈ لک. عثمان سمیع الدین and then Rory Doland. السلام علیکم, مصباح عثمان بول رہا تھا. جی وعلیکم السلام. مصباح, میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, آپ اپنی سوچ میں آپ کتنے کلوز ہیں ٹو نوئنگ یور بیسٹ 11 اہیڈ آف T20 کی 11 اہیڈ آف دا ورلڈ کپ؟ یعنی کتنی پوزیشنز آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ ابھی تھوڑی سی ڈیسائیڈڈ نہیں ہے؟ اس لیے پاکستان کا ٹاپ آرڈر کافی مضبوط ہے, 1-2 سملر ٹائپ آف پلیئرز ہیں مگر مضبوط ہو گیا ہے. آئی تھنک مڈل آرڈر میں تھوڑی سی ایشو چل رہی ہے کافی دنوں سے. تو ہیز دس PSL ہیلپڈ یو ان اینی وے ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کون ہو سکتا ہے ان سلاٹس میں؟ جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. PSL میں کافی چیزوں کو کلیئرٹی ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک ہی ایسا اسپاٹ ہے آپ کا جو مڈل آرڈر نمبر 5 نمبر 6 جو پیچھے ہماری 2-3 سیریزوں میں ایشو رہا ہے. اینڈ اوبیسلی اسی پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو کیسے اس گیپ کو فل ان کرنا ہے. وہیں پہ ظاہر ہے اب اعظم آیا ہے اور اوبیسلی شعیب مقصود آیا ہے. دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کو کمبینیشن, وہ ایک ہمیں بھی جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہی جگہ ہے. پر اوور آل اگر دیکھیں بالنگ آلموسٹ وی نو دیٹ دس از اوور بالنگ اٹیک. اوپر کے 4 بیٹسمین وہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ جی کون ہے, اور ساتھ اس کے ایڈیشنل جو ریپلیسمنٹس ہیں وہ کون سی ہیں. مور اور لیس ٹیم میں ایک آدھی پوزیشن ہے جس پہ ہم نے نیکسٹ 2 سیریزیں ہیں ان پہ ہم نے فوکس کرنا کہ ہاں جی یہاں پہ ہم نے کیسے سیٹل ڈاؤن کرنا ہے کس کو. بٹ اوور آل آئی تھنک وی نو دی ٹیم. تھینک یو. Rory, can you ask the question? Sure. Thank you, Misbah. I just wonder, could you reflect for me on when you came to England last year? It was obviously a very unusual time in terms of you were locked down in the hotels. You couldn't leave the ground really when you were with the team. Just wonder if you could talk about how tough that was in terms of getting the on-field stuff right, and then how much different you're expecting it to be this time, and whether the players can actually maybe enjoy themselves a little bit this time as well. To me as a head coach, I will prefer to be in the lockdown, staying together. So it will help the team just get connected and do whatever you want to do. You are in the game room, you are in the team room, you are practicing together, you are having your food together. So that was amazing. And one thing, obviously, you are just cut off from everyone outside, from the families, but obviously at that time the whole team became a family, and that actually helped the team. This time obviously I am not sure that what sort of conditions we'll get in terms of that. We can just go around or go outside, meet people, but obviously for the last 6-7 days being in the quarantine, tough days. I think today is the last day, and obviously from tomorrow we'll start practice. So
bit relief after that. I think overall, I feel when there are spectators and atmosphere in the ground, so it'd be different. Obviously, you can meet. I'm not sure that we're gonna meet someone or not, but mental side, the players will be a bit more relaxed. So looking forward, you can feel that the situation is a bit more normal than last time, because it was totally empty outfields and you cannot go out from the hotel. You just go in the ground and just in the room. So this time, I think it will be, in that regard, it will be better. Thank you, Misbah. Badi bhai and Ibadullah. अच्छा मिसबा भाई, सवाल ये करना था सबसे पहले तो ये है कि यूनुस खान पहले भी बात हो चुकी कि चले गए, क्या आप समझते हैं कि आप जैसे मुस्तनद कोच होते हुए आप बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त करते रहे, कोचिंग भी टीम को अच्छा कर रहे हैं, क्या समझते हैं कि उनकी आपके होते हुए उनकी जरूरत थी? अगर नहीं है तो कितना फर्क पड़ेगा? और दूसरा, मिडिल ऑर्डर में आपने बात की, लेकिन जो हमें स्पिन डिपार्टमेंट है उसमें भी हम जो है वो शादाब को मुसलसल खिलाई जा रहे हैं, क्या इस सीरीज में कोशिश होगी कि उस्मान कादिर को चांस दिया जाए जो मुसलसल परफॉर्म भी कर रहे हैं? देखें, यूनुस भाई पे तो पहले ही बात हो गई है, मैंने पहले ही बात की है कि जाहिर है उनका जो एक्सपीरियंस था, इट वाज ऑलवेज हेल्पफुल फॉर द प्लेयर्स. कंपैरिजन नहीं होता मेरे होते हुए उनका होना है, उनकी अपनी एक ऑब्वियसली जगह थी और उन्होंने बड़ा अच्छा काम भी किया, तो उसको कंपैरिजन मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए. और जहाँ तक आपने स्पिन बॉलिंग की बात की, देखें ऑन एंड ऑफ शादाब भी लास्ट सीरीज में इंजर्ड हुआ, उसमें उस्मान कादिर को भी चांस मिला, तो इसीलिए आपके पास जो रिप्लेसमेंट्स होती हैं या जो दूसरे प्लेयर होते हैं वो आपके पास इसीलिए होते हैं, किसी भी टाइम आप उनको खिलाएं. नवाज को चांस मिला, उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, अभी इमाद भी है हमारे पास, तो आई थिंक हर जगह पे हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है वो है. और जहां भी हमें नजर आएगा कि हमें जिस भी प्लेयर की जरूरत है उसको जरूर हम देखेंगे, वहां पे खिलाएंगे. मिडिल ऑर्डर में भी इसी तरह ऑप्शंस हैं. लुक फॉरवर्ड कि हाँ जी, अल्लाह करे सारे यहाँ पे परफॉर्म करें. कॉन्फिडेंट है हम कि इंशाल्लाह करेगी टीम यहाँ पे अच्छा कर, पहले भी अच्छा करती है, तो अभी भी जाहिर है इन पे कॉन्फिडेंस है, तो इनको लेके आए और होपफुली यू परफॉर्म वेल है. Ibad. अस्सलाम वालेकुम. मिसबा जी भाई, वालेकुम. मिडिल ऑर्डर, जाहिर सी बात है मिडिल ऑर्डर के हम मसाइल का शिकार है पाकिस्तान टीम, और यूनुस खान ने ये तमाम जिम्मेदारी आपके ऊपर ही आयद होती है, तो कितना चैलेंजिंग होगी ये ड्यूटी आपके लिए? और मिडिल ऑर्डर के अंदर आजम खान का भी नाम आ रहा है, तो आप समझते हैं कि आजम खान उस पोजीशन के लिए साजगार रहेंगे? देखें, कोशिश करते हैं हम, तो जाहिर है जो भी यहाँ पे प्लेयर आए हैं, टीम आई है, जाहिर है हमने यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी प्रिपरेशंस करनी है, प्रिपरेशन करके कॉन्फिडेंस करना है, शो करना है इन पे, और होपफुली कि ये लड़के जाके अंदर परफॉर्म करें. आजम नो डाउट टैलेंटेड है, थोड़ा सा आउट ऑफ फॉर्म जरूर है, उस तरह परफॉर्मेंस नहीं की उसने भी रिसेंटली, बट पीछे सबको पता है कि वो जो मॉडर्न T20 क्रिकेट है जिसमें कि स्पेशली नंबर 5 या 6 पे आके आपको जो पावर चाहिए होती है और स्ट्राइक रेट्स चाहिए होते हैं, वो पोटेंशियल है उसमें. होपफुली कि हाँ प्रिपरेशन के बाद वो रोल वो टीम के लिए प्ले करे. लुकिंग फॉरवर्ड, जाहिर है वो यहाँ आया है तो उसको कंसिडर करके ही लाए हैं कि वो वहाँ पे वो हमें वो परफॉर्मेंसेस दे सकता है. विल जस्ट सी कि हाँ जी कौन से कॉम्बिनेशन के साथ जाना है. Thank you. Last two questions, Thank you. Zahid Noor and Usman Khan, please. अस्सलाम वालेकुम मिसबा भाई, सबसे पहले तो आपको इंग्लैंड में वेलकम करते हैं. तो जी बहुत शुक्रिया. वालेकुम. दूसरा ये है कि साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे में देखा गया कि रिजवान, बाबर, फखर और शर्जील जो है वो चारों ओपनिंग स्लॉट पे खेलना चाह रहे थे, जिसका नुकसान भी हुआ. तो क्या अब रिजवान और बाबर को नीचे खिलाने पर कोई फैसला हुआ है, या इन्हीं चारों में से कोई ओपनर्स होंगे? कोई इस हवाले से अगर बता दे तो.
میرے خیال میں تو ویٹ کرنا چاہیے آپ کو. میچ جب ہوگا تو آپ کو نظر آ جائے گا کون اوپننگ کرے گا. ظاہر ہے یہی اوپنر ہے تو انہیں میں سے کوئی اوپن کرے گا. عثمان مصباح میرا آپ سے کوشچن تھا کہ شاہ نواز دھانی نے بہت اچھا پرفارم کیا ہے پی ایس ایل کے اندر, ٹاپ بالر رہے ہیں پی ایس ایل کے اندر. کیسا ان کے اندر پوٹینشیل آپ دیکھ رہے ہیں؟ کیا ہم دیکھ رہے ہیں ان کو ان میچز کے اندر ان ایکشن, یا ابھی پرانے جو آپ کا کمبینیشن چل رہا ہے یا اسی سے ہی آپ گراؤنڈ میں جائیں گے؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ شاہ نواز دھانی obvious فیوچر پراسپیکٹ پاکستان کے لیے. ریڈ بال کرکٹ میں زمبابوے میں تھا وہ ٹیسٹ میں, اور یہاں پہ بھی کیونکہ 20 دن پہلے ٹیم اناؤنس ہو گئی تھی تو ہی واز ناٹ ان دا وائٹ بال کرکٹ. ابھی وہ ٹیسٹ میں ہے, اسکواڈ میں ہے ویسٹ انڈیز میں. دیکھیں گے آگے, انگلینڈ میں تو وہ نہیں ہے بٹ دیکھیں گے the way یہ پروگریس, جس طرح وائٹ بال کرکٹ میں ٹاپ وکٹ ٹیکر ہوا ہے اور جس طرح کی اس نے بالنگ کی ہے, از آلویز دیئر. اینڈ آئی تھنک جو پوٹینشیل وائز نظر آتا ہے کہ اچھا فیوچر نظر آ رہا ہے پاکستان کے لیے بھی, اس کے لیے بھی. Thank you so much, gentlemen. We have to go for the second COVID-19 testing. Thank you so much, Misbah bhai. Tomorrow we are going to have our first training session. Inshallah, stay in